So okay. So next. Okay. Uh, so I'm next going for just 1 minute. Huh. Next, we'll go to air connectivity. So these are for the first one is for the road connectivity. Road dekhile, then port dekhile, then amaro next jiba abe air connectivity को. So air connectivity तो तुम जानी थी जो regional connectivity scheme रे उड़ान रे अभी तो बहुत सारा airport proposed airport भी अच्छी कितना functional भी अच्छी तो हमरो गोटी ही international airport अच्छी विजू पटनायक airport जोटी की 22 टा city को जाउची and 4 international destinations हम विजू पटनायक एयरपोर्ट रो जाउची बट तुमको एटी स्कीम गवर्नमेंट रे कोन कोन अछि म कहि दोची गोटे जस्ट 2024 डिसेंबर रे पास हेची न्यू डेस्टिनेशन पॉलिसी 2024 बाय जीओओ मींस गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा मु गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को जोटी भी जीओओ लिखिची सो तुमे भाबी दबो कि एटा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा लिखा हेची ओके न्यू डेस्टिनेशन पॉलिसी माने डोमेस्टिक भी आउ इंटरनेशनल भी air connectivity बढ़ाइबा को enhancing air connectivity within India and abroad. Government is planning to do new destinations policy for 2024. Then ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ ଏଟା ଏସିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଭିଲ ଆଭିଏସନ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ୱିଙ୍ଗସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2024 ଓକେ ଏସିଆସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଭିଲ ଆଭିଏସନ ଇଭେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଳିଛି अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ओके दिस इज अ very good point. If you have to write success stories of the air connectivity in Odisha, you can mention this one Wings India 2024 survey. Asia's जोटा के एशिया largest civil aviation event सेठी ओडिशा को बेस्ट स्टेट मिलिछि अंडर आरसीएस उड़ान ओके देन देखो एटा गोटे न्यू एयर स्ट्रिप एबे होची दांडा बस करिके ओके बहुत सारा तो प्रपोज्ड अछि एटा भी गोटे न्यू प्रपोज्ड हेछि जस्ट रिसेंटली तो you can mention it is in Mayurbhanj Dandabasa and another one is Amarta also. Amarta is in Baleshwar Mayurbhanj border. So it is also Amarta and Dandabasa, two places where there is new airstrip is going to be there. Okay, next is your what is going to please see here for the capacity building of the aviation sector. Government is planning Biju Patnaik Aviation Center BVSC Birasala Dhenkanal. It is in Dhenkanal. Okay, सेठी कोन करियर अछि ना वर्ष को 500 टा पायलट काढियर अछि annually. ओके मु पूरा प्योर ओडिया रे भी कहूची वर्ष को 500 टा पायलट काढियर अछि annually कोउटो ना सेटा ट्रेनिंग सेंटर टा कोउटी अछि ना बिरासाला ढेंकानाळ आ ऑलरेडी तमे जानिथिबो कि गवर्नमेंट रो गति भी अछि भुवनेश्वर रे ठीक अछि in line with gati आउ गोटे हेजी गोटे बिजू पटनायक एविएशन सेंटर बीवीएससी ठीक अछि these are some of the means some of the schemes government is going through okay some of the government implemented schemes आउ गोटे कोन अछि नेक्स्ट गोटे अछि स्मॉल एयरक्राफ्ट स्कीम्स ओके ताको SAS स्मॉल एयरक्राफ्ट स्कीम से कौन होची ना जोटा कि 50 रु कम पैसेंजर जो जगह को जिबे ता पई गोटे स्पेशल स्कीम लॉन्च हेची स्मॉल एयरक्राफ्ट स्कीम्स सेथरे एबे जाय कोटी खेची ना भुवनेश्वर रु उत्केला एटी गोटे भुवनेश्वर छाडी जाईची भुवनेश्वर रु उत्केला और भुवनेश्वर रु जयपुर 50 रु कम जन को नेकी जेमते गोटे स्मॉल एयरक्राफ्ट जाई परिबो सेटा गोटे फेज वाइज मैनर रे भुवनेश्वर उत्केला जाईची भुवनेश्वर रु जयपुर जाईची उत्केलाटा कोटी कलाहांड रे तो these are some of the government scheme new destinations policy Wings India 2024 जिनसो तुम लिखि परिबो सक्सेस स्टोरी केतेटा न्यू एयर स्ट्रिप रो ना दे देबो जेमति मु कहले गोटे दांडा बस गोटे जगह अछि केतेटा जगह दे देबो तपर देन बिजू पटनायक एविएशन सेंटर बिरासाळ रे 500 जन को ट्रेनिंग दे कि 500 पायलट एनुअली बाहरिबे आ ऑलरेडी गति अछि आगरु देन स्मॉल एयरक्राफ्ट स्कीम्स गोटे SAS करके अछि to provide 50 passenger रे पे गोटे स्मॉल एयरक्राफ्ट स्कीम्स बाहरि छी ओके सो these are the some of the schemes in in your air connectivity. Then we'll go for railway connectivity. देखो railway connectivity obviously तो state कौन कौन करूची हम देखिबा ठीक अछि तो किछि किछि स्टेट कौन कौन करूची देखिबा देखो ओडिशा is the number one state in the country in terms of total outward movement of commodities okay see here you can mention here this one even in your trade किछि गोटे इकोनॉमिक्स रे क्वेश्चन आसुची किछि गोटे इवन ज्योग्राफी ऑप्शनल मु भी 2 वर्ष पूर्व मोर ज्योग्राफी ऑप्शनल थिला मु जानि छी किछि जगह रे तुम जदि रेलवे रे किछि लेखिया को चाहौ you can mention this one number one state in the country in terms of total outward movement of the commodities okay then
ओडिशा रेल इंफ्रा डेवलपमेंट लिमिटेड गोटे हेछि ORIDL ताको कहउचंते ओडिशा रेल इंफ्रा डेवलपमेंट लिमिटेड वाज constituted as a joint venture of Ministry of Railway for infrastructure development in railway. Okay, infrastructure development रेलवे रे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाई we are means Odisha government has planned to implement Odisha Rail Infra Development Limited जोड़ा कि गोटे joint venture of Ministry of Railway रे. अच्छा, then next होची these are normal means normal things तीनटा वंदे भारत नुआ चलेबे. ओके, जोटी देखि दबो रायपुर रु विशाखापट्टनम, then RKL means राउरकेला to हावड़ा, then BMपुर means ब्रह्मपुर to टाटानगर. ओके, एटा टिके देखि दबो. then 8टा न्यू रेलवे प्रोजेक्ट अछि. ए जिनसर तुम आ मन रखि परिबनी. ओके, तो 8टा न्यू रेलवे प्रोजेक्ट अछि. देन देख एटा गोटे आउ गोटे सक्सेस स्टोरीज भी लिखि परिबो. एटा गोटे देख 98.3% ओडिसा रे टोटल रेलवे ट्रैक लाइन अछि 3039 किलोमीटर. Out of this 3039 kilometer, 98.3% of the railway lines are electrified. Okay, so 98.3% are the electrified. ओके, तो एटा को 100% इलेक्ट्रिफाइड टारगेट अछि बाय केते ना 2025. ओके, तो मैं लिखि भी परियो टारगेट अछि 100% बाय 2025. तो आ ओडिसा होची मैं एटी गोटे बड़ फैक्ट मिस करी छी. ओडिसा होची थर्ड स्टेट जे कि इलेक्ट्रिफाइड नंबर ऑफ मान जो किलोमीटर इलेक्ट्रिफाइड करिया ओडिसा होची थर्ड स्टेट. ओके, so माने ओडिसा ऊपर आ दि जण अछंती. ओडिसा इज द थर्ड स्टेट. ओके, these are the some of the success stories of the railways. Okay, so next I will go through your next power sector. Okay, one thing I want to tell you here in renewable energy and in power sector मु किछि किछि जिंस आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लिखिछि जोटा कि इकोनॉमिक सर्वे रे नाही. एज आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो मते जो जो जिंस आसुथुला कि लेखिया दरकार मु सेटा लिखिछि. ओके, तो किछि जिंस इकोनॉमिक सर्वे रे नाही तो मु किछि किछि एक्स्ट्रा लिखिछि मु आगरु कहूछि. अच्छा, तो हां, तो नेक्स्ट हम जिबा पावर सेक्टर. टेलीकम्युनिकेशन अछि, टेलीकम्युनिकेशन परे पावर सेक्टर को जाउछि. देखो, तो टोटल 342 लाख टेलीकॉम सब्सक्राइबर अछंती बोथ कैटेगरी रे, माने वायरलेस एंड योर वायर दीटा कैटेगरी टोटल 342 लाख अछंती टेलीकॉम सब्सक्राइबर ओडिसा रे. आ जहा भीतर 98.5% वायरलेस अछंती. ओके, एंड जो टेली डेंसिटी अछि तुम एटा गोटे चैलेंजेस लिखि परबो. ओडिसा रे टेली डेंसिटी अछि ओडिसा रे 77%, बट इंडिया रे टेली डेंसिटी अछि 85.7%. तो तुमको जदि कोट करियर अछि तुम लिखि परिबो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी रे भी लिखि परिबो ए जिंसटा. ठीक अछि, डिजिटल लिटरेसी रे भी जदि कोटी कोट करियर अछि लिखि परिबो कि टेली डेंसिटी ओडिसा रे एतिकी अछि, इंडिया रे एतिकी अछि. ओके, देन बट गोटे सक्सेस स्टोरी होउची. देखो, ओडिसा टेलीकॉम सीएजीआर थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट हेछि एंड इंटरनेट सब्सक्राइबर पर 100 पॉपुलेशन रे इंक्रीज हेछि 2.6 टाइम्स. ओके, तो ओडिसा रे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज जो होछि तार सीएजीआर थर्ड हाईएस्ट. ओके, थर्ड हाईएस्ट इंक्रीमेंट हेछि. एटा इकोनॉमिक सर्वे रे भी एते नाही, जस्ट मु दीटा वर्ष रे इकोनॉमिक सर्वे मिसे की दी तीनटा पॉइंट काढिछि. ओके, सो यू मे मेंशन दैट दिस वन. एंड आउ गोटे छोट कथा कहूची कि तमे भारत नेट कथा जानथिबो कि सब ग्राम पंचायत को फाइबर ऑप्टिक्स जो है दिया जाउची. फाइबर ऑप्टिक्स जो हां नेटवर्किंग दिया जाउची. देन ओपीटीसीएल कोन करिछि ना सेही भारत नेट यूज करिके तमे गोटे बड़ इश्यूज एटू छोट इश्यूज कहूची दोज हु वांट टू मेंशन एटा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट टिके, बट टिके कहि दउची. ओपीटीसीएल कोन करिछि ना भारत नेट यूज करके जोटा फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन यूज करके with the help of this BharatNet initiative कोटिया ग्राम पंचायत को internet connectivity दीजिए. Okay, so this is a very good point. You can summarize anywhere whenever you need it. तो आउथर कहि दउची OPTCL BharatNet initiative अंडर रे फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज करके कोटिया ग्राम पंचायत को इंटरनेट कनेक्टिविटी दीजिए. ओके, सो दिस थिंग्स आई हैव रेड समवेयर. सो मु चेक भी करथिला जे सकाळे एटा ट्रू थिला. तो तमे एटा लिखिबो जे लिखि दबो. इवन मेंशन भी करिछि इलेक्ट्रिक सेक्टर रे ओपीटीसीएल रो ऑब्जेक्टिव रे मेंशन भी करिछि तळे मु सेटा. ठीक अछि, बट नेक्स्ट आमे जिबा पावर सेक्टर. तो देखो, पावर सेक्टर रे दीटा जिंस अछि पूरा लेमन टर्म रे कहूछि. गोटे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अछि. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माने कोन, जदि हमर पांचटा जनरेटर अछि ए बी सी डी ई, जनरेटर 1 कहबो मु गोटे मेगावाट दउछि, जनरेटर 2 कहबो मु समस्त हम कहले गोटे गोटे मेगावाट दउछु. तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 5 मेगावाट. किंतु ड्यू टू ऑपरेशन
किछि किछि जनरेटर किछि किछि ऑपरेशन मेंटेनेंस चले गोटे जनरेटर लेट से तार मैक्सिमम कैपेसिटी थिबो गोटे मेगावाट से किंतु कहबो कि मु देबी गोटे 0.8 मेगावाट तो 0.2 मेगावाट को से रिजर्व रखते तो गोटे मैक्सिमम कैपेसिटी अछि गोटे इंस्टॉल्ड अछि जोटा कि से ताको रिजर्व रखि सारला परे कहंती ओके तो ओडिसा रे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अछि 8844 8.8 मेगावाट 2023-24 रे एंड अगर थिला 8116 तो 8,844 means 8 gigawatt okay which is in gigawatt this is in 8.8 gigawatt अच्छी है ओडिसा रे installed capacity whereas average state demand होची 3,869 megawatt only means 3.8 gigawatt is the average demand but the installed capacity is 8.8. So Odisha is obviously a power surplus state. Around 4.6 megawatt is 4.6 gigawatt is we are selling to other states. So there is a bi-directional power flow happening. So that's why grid ଆମର जो ओडिसा ग्रिड अच्छी ग्रिड को दैट ग्रिड को 2243.7 करोड़ टंका इनकम करिছে बायलैटरल ट्रेडिंग रु ओके सो देखो तुमर क्वेश्चन होची नेक्स्ट कि ओडिसा इज अ पावर सरप्लस स्टेट मु कहली तले हमर कोन व्हाट इज द सिचुएशन व्हाई वी आर देयर इज अ फ्रीक्वेंट आउटेजेस ऑफ पावर ओके फ्रीक्वेंट पावर फेल्युअर सो देखो पावर सरप्लस हेले भी फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस होवार किछि किछि कॉज अछि ट्रांसमिशन लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर गोटे रेकॉर्ड कहूची तुमको इन ओडिसा 75% ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर आर आउटडेटेड या प्री इंडिपेंडेंस टाइम रू भी किछि किछि ट्रांसमिशन लाइन अछि ओके सो ट्रांसमिशन लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इज आउटडेटेड एंड द ट्रांसफॉर्मर इज आल्सो आउटडेटेड ओके एंड अनदर थिंग गोटे ट्रांसमिशन लाइन रे तले पावर गोटे पटरू आउट पट को सेंड करूची त किछि ट्रांसमिशन लॉस हबो से लॉस टाको टेक्निकल टर्म जाउनी एटीएनसी लॉस कहंती सो एटीएनसी लॉस जो इवन तमे नॉर्मली लिखि परिबो कि ट्रांसमिशन लॉस जो होउची ट्रांसमिशन लॉस दिल्ली रे जते बेले 8% थिला बेले ओडिसा रे अछि 17% मोटी मेंशन कर देछि ठीक अछि 8% थिला बेले ओडिसा रे अछि 17% ओके सो दैट्स व्हाई बीइंग ए पावर सरप्लस स्टेट आल्सो वी हैव टू डिपेंड ऑन means there is a frequent power failure in Odisha देखो मु किछि किछि एटा जाउछि टेक्निकल डिटेल्स को जाइछि बिकॉज़ क्वेश्चन आसी भी पारे ओके सो टिके दैट्स व्हाई मु पढे देले तो नेक्स्ट मु जाउछि पावर मिक्स ओडिसा रे कण केमति अछि देखो एटा होछि थर्मल टिल नाउ थर्मल इज द हीरो 56% and hydro ओडिसा रे 27% and renewable 17% and renewable कथा हम नेक्स्ट आगु को देखिबा नेक्स्ट होची तमरो देखो गोटे आउ गोटे पॉजिटिव जिंस कहूची हां एटा भी टिके देखि दबो सोलार ओडिसा रे जति की फुन से रिन्यूएबल भीतर सोलार इज द मीन सोलार इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स तो इट इज 69.88% एंड विंड भी 21.6% एटारे जो विंड 21.6% अछि ना एटा बहुत सारा प्रपोज्ड अछि किछि किछि नुवा स्टार्ट हेछि ओके and one thing here mention I have not mentioned shep small hydro okay that is small hydro जोटा कि 25 मेगावाट रु कम अछि जहार कैपेसिटी ओके एंड बायोमास ओडिसा रे बहुत ही कम अछि 1 ऊपर करूचंती आउ केही बायोमास ऊपर that's why biomass is only 1.3% बराबर दरकार so your suggestion should be कि we have to focus more and more on biomass also okay तो another thing power sector रे domestic consumption ओडिसा रे 2020 रे 46% थिला बेले एबे domestic consumption 28.5% हो जाइछि कमी जाइछि domestic consumption जते बेले इंडिया रे domestic consumption बढ़ी चलीछि सी आवर पर कैपिटा कंजम्पशन इज मोर जदि तमे पावर सरप्लस जो बड़ बड़ स्टेट संगे कंपेयर करियो राजस्थान महाराष्ट्र केरला तांको संगे जदि कंपेयर करियो तो हमर जो डोमेस्टिक कंजम्पशन पर कैपिटा कंजम्पशन हमर कम अछि ओके पर सॉरी पर कैपिटा कंजम्पशन वी आर इन थर्ड पर कैपिटा कंजम्पशन ले वी आर इन थर्ड बट व्हाट हैपेंस जो हमर इंडिविजुअल कंजम्पशन सॉरी जो हमर टोटल कंजम्पशन अछि डोमेस्टिक कंजम्पशन हमर आम हिसाब रे 2020 रे 46% थिला एबे सेटा हे जाइछि 28.5% ओके एनर्जी सेविंग को बहुत बहुत प्रायोरिटी दोछु जति कि भी गवर्नमेंट ऑफिस अछि ना सेठी गुटे नॉर्मल फैन को काढी की जो नॉर्मल फैन अछि सेठी गुटे इंडक्शन मोटर फैन इंडक्शन मोटर एटी यूज हुए जोटा कि बहुत पावर खाए
ओके आम एटा को काढ़ी आम कौन करूँ ना ब्रशलेस डीसी बेसिन फैन यूज करूँ बीएलडीसी फैन कहते ओके तो यही सब किछिटा जिनस आमर एनर्जी सेविंग बहुत भल अच्छी ओके नेक्स्ट हूँ मुझे जस्ट सेयार कर एटा जस्ट कहूली आम नो डाउट आमर पावर आमर कमी जाइए तो आमर डोमेस्टिक कंजम्पशन आमर डिक्रीज करिछि बट आमर टोटल जो अच्छी कंजम्पशन पर कैपिटा कंजम्पशन 2419 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट तो आम वर्ष को पर कैपिटा कंजम्पशन होची 2419 व्हिच इज हायर देन द पावर स्टेट लाइक राजस्थान ओके पॉपुलर स्टेट लाइक राजस्थान तो आम एटी कोन करि परिबा ना एनर्जी सेविंग करि परिबा तुम जानिथिबो एटा कोन करि हबो ना बीडब्ल्यू 5 रेटिंग गोटे आसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ओके तो ओडिशा कोन करछि गोटे ईईएसएल अछि एनर्जी एफिशिएंसी सेविंग लिमिटेड एमती अछि तो ईईएसएल संगरे मिसिकी ओडिशा कोन करछि गोटे एमओयू साइन करछि टू सेव एनर्जी ओके देन एटा जोटा कहिथिले अंडर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ओपीटीसीएल एक्सटेंडेड 17 एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसफार्मर एंड इंटरनेट टू कोटिया जोटा आगरो जस्ट कहि की गले देखो अनदर थिंग ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲସ୍ କଥା ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲସ୍ ଆମର 2007 ରୁ 2023 ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଡିକ୍ରିଜ ବାଇ 5% बट सेटा एबे स्टिल हायर अछि दिल्ली रे 8% थिला बेले ओडिसा रे 17% दैट्स व्हाई हमकु ट्रांसमिशन लॉस कम करिया को पड़ियो ओके दीस आर सम ऑफ द आई नो दिस थिंग्स आर बोरिंग फॉर यू ओके सो बट टिके टिके तो अनेवा को पड़िबो ओके देन हम रिन्यूएबल एनर्जी कथा देखिबा हमर स्टेट रो एम अछि एनहांस द हारी कैपेसिटी बाय 11 गीगावाट करिवो दिस इज द न्यू प्लेस अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग बाय 2030 आ प्रेजेंट कते अछि 2398 मेगावाट मो एटा मार्च 2000 सॉरी एटा मु जस्ट डिसेंबर 2024 रो डेटा कहूची जोड होची अराउंड 2.4 गीगावाट तमे लिखि परिबो एति पय हम कोन करिछु देखो गोटे कराइछि ओडिशा आरी पॉलिसी 2022 रे आस्तला रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी सेठी गोटे अछि रिन्यूएबल एनर्जी नोडल एजेंसी रिना जोटा कि हमर रेगुलेटर हेछि ओके तो स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी हम गोटे नोडल एजेंसी अछि रिना ताको कहउचंती ओके देन ईवी पाई हमें कौन कराई ना 112 टा चार्जिंग स्टेशन हेची ओके 112 ईवी चार्जिंग स्टेशंस एटी ओडिसा रा कोन अछि ना ओडिशा ईवी पॉलिसी 2021 ओके ओडिशा ईवी पॉलिसी 2021 यू मस्ट हैव टू मेंशन देन 112 टा ईवी चार्जिंग स्टेशन हेची एथरे भी प्रॉब्लम अछि मोस्ट ऑफ द ईवी चार्जिंग स्टेशंस आर private mode are operating in private mode okay then pm kusum yojana janicho okay irrigation solar irrigation 5000 plus solar pump heichi ethre then your rooftop solar panel re orida jo achi odisha renewable energy development agency तो सेटा इंस्टॉल करछि 1357 किलोवाट ऑन ग्रिड रे 45 किलोमीटर ऑफ ग्रिड रे जस्ट एटा टिके खाली आखि पके दिजबे एंड एटा सबुटु बड़ कथा देखो एटा गोटे ओरिडा गोटे न्यू गोटे प्रोजेक्ट जस्ट एबे हेछि 14 सोलार मिनी ग्रिड हेछि ठीक अछि 14 सोलार मिनी ग्रिड इन कलाहांडी जोटा कि अनएसेसेबल एरिया थिला सेठी ओरिडा कोन करछि ना सोलार मिनी ग्रिड गोटे तयारी करछि you can mention this one whenever required 14 solar mini grid okay then आउ गोटे जिंस हेछि रेस्को मॉडल प्लीज एटा को टिके ध्यान रखिबो रेस्को मॉडल कोन ना रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल तो एथरे कोन अछि ना ओरिडा टारगेट करछि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैला जो धर लोक सेवा भवन हैला कि तमरो हॉस्पिटल हैला कॉलेज हैला यूनिवर्सिटी हैला जति कि भी भुवनेश्वर रे अछि तांकु सेठी देखि ओडिसा ओरिडा टारगेट 6 पॉइंट आगे फेज वाइज भुवनेश्वर कटक रे चलिबो टारगेट 6.5 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इन सोलर पावर ठीक अछि एटा को कहउछन्ते रेस्को मॉडल ओके ता फुल फॉर्म ता भी मो ब्रैकेट रे लिखि दैछि रेस्को मॉडल देन गोटे भुवनेश्वर आरी सिटी रिन्यूएबल एनर्जी सिटी प्रोग्राम गोटे लॉन्च हिची तो एटा देखि दबो कि जस्ट 100 दीटा गोटे सोलार 100 टा सोलार ट्री बनेबे प्लस 100 मेगावाट ऑफ बाय डिसेंबर 2025 100 मेगावाट सोलार रूफटॉप सोलार इंस्टॉलेशन करिवे ओके देन अनदर थिंग सॉरी ओके देन अनदर थिंग ग्रीन अमोनिया प्लांट गोटे हेछि बाय 2027 गोपालपुर रे जोटा कि हमें ऑलरेडी वी हैव मेंशन ग्रीन अमोनिया प्लांट इन 2027 आ जोटा मु जस्ट कहि के असली एमओयू विथ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ईएसएल टू इंप्रूव एनर्जी सिक्योरिटी then odisha has please mention these things in your answer whenever required see एबे जो recently concluded उत्कल ओडिशा conclave हैला सेठी 4.33 lakh investment हेची to attracted investment proposal of 4.33 lakhs in renewable energy sector okay ए सेक्टर पय 4.33 lakhs हेची okay अच्छा अब जो टारगेट अछि 11 गीगावाट रो से 11 गीगावाट टारगेट रु
7.5 gigawatt का हमर कोन टारगेट अछि ना सोलर आ एबे सोलर कैपेसिटी केते अछि अराउंड 1.5 gigawatt ओके एंड आउ कोन अछि ना स्कूल लेवल रे कॉलेज लेवल रे किछि गोटे एनर्जी क्लब होउची जोटा कि 8659 टा 8679 एनर्जी क्लब जोटा कि एनर्जी सेविंग रिलेटेड काम करछन्ती ठीक अछि सम ऑफ द डेटा तुमको जो डेटा इंपोर्टेंट लागुची मन रखि दबो किछि किछि डेटा या भीतर मन रखिया दरकार ओके देन आमे जिबा गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी रे कोन गवर्नमेंट इनिशिएटिव अछि देखो फर्स्ट इनिशिएटिव मुख्यमंत्री शक्ति विकास योजना ता पई 1033 करोड़ दिया है पैसा मन रखिया दरकार नहीं अगेन सो एटा कोन होची ना एटा ट्रांसमिशन लाइन रीडेवलपमेंट पई मु तुमको कहितली कि ट्रांसमिशन लाइन बहुत पुराना हे गलानी ट्रांसमिशन लाइन रो लॉसेस बहुत अधिक अछि दैट्स व्हाई दोज हु वांट टू मेंशन यू कैन मेंशन इट इज फॉर मुख्यमंत्री शक्ति विकास योजना फॉर एनर्जी मींस फॉर ट्रांसमिशन लाइन रीडेवलपमेंट okay then again this one is next one is अक्षय शक्ति विकास योजना तो अक्षय शक्ति तो हमको जाना पड़थु ए लाइन रही अक्षय शक्ति मींस रिन्यूएबल एनर्जी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपांशन हमें ओडिशा गवर्नमेंट 1093 करोड़ देछि देन मुख्यमंत्री शक्ति संरक्षण योजना मींस फॉर एनर्जी सेविंग प्लीज जिते बड़े भी तुम इलेक्ट्रिसिटी रे किछि स्कीम आसीबो यू मस्ट हैव टू मेंशन दिस थ्री स्कीम्स ओके এই তিনটা স্কিম নিহাতি মেনশন করিব মুখ্যমন্ত্রী শক্তি সংরক্ষণ অক্ষয় শক্তি বিকাশ যোজনা এন্ড মুখ্যমন্ত্রী শক্তি বিকাশ যোজনা ঠিক আছে আউ গোটে কোন ହେଇଛି না जो ग्रिडको ଅଛି जो ग्रिड ଅଛି हमर ग्रिड मस्ट अकाउंटेबल दैट द लीगेसी कंपनीज मे कंप्लाई विथ द रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन आरपीओ माने जदी गोटे धरो एनटीपीसी तार गोटे काम करूची जो तर एनटीपीसी जहाँ काम करूची कि नालको जहाँ काम करूची तांको कहर अछि कि मु एति की रिन्यूएबल एनर्जी किनिबी ग्रिड थू कि माने रिन्यूएबल एनर्जी किनि कि मु जहाँ काम करबी रिन्यूएबल एनर्जी रे करबी दैट इज कॉल्ड योर आरपीओ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन ओके रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशंस ओके देन जो जिनसटा आगुरु कहली कि ओडिशा गवर्नमेंट कोन कोन करिछि एटी लिखिछि 5 स्टार बीएलडीसी फैन इन गवर्नमेंट ऑफिसेस बिल्डिंग टू इंप्रूव एनर्जी सिक्योरिटी बीएलडीसी स्टैंड्स फॉर ब्रशलेस डीसी जोटा कि पावर सेविंग हुए ठीक अच्छे देन एटा इंडक्शन मशीन फैन जो थिला ताकू काटी की बीएलडीसी फैन यूज करा होची ओके देन रिन्यूएबल पावर एंड दिस थिंग्स गन देन वी विल गो टू नेक्स्ट RE capacity completed transport also completed next thing just 1 minute railway also completed then we'll go to before urban development just mo agote jinso देखिया चाहूची मो जस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को टिके पळे जाउची लास्ट स्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट जन जदी टाइम हैला तो मु अर्बन डेवलपमेंट भी सार देबी आज देखो डिजास्टर मैनेजमेंट रे तमे समस्त जानिथिबो ओएसडीएमए अछि ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ओएसडीएमए आ मिशन शक्ति मिसिकी कोन करचंती 5 लाख वुमेन एसएचजी माननकू ट्रेन करचंती मोस्ट डिजास्टर प्रोन एरिया जोटा कि 14 टा डिस्ट्रिक्ट 14 district in Odisha are disaster prone. So OSDMA and Mission Shakti are trained over 5 lakh women SHG in those 14 areas. Okay. Then on na till now 4 lakhs training दिया है आपदा मित्रज जो मानो कि फ्रेंड ऑफ कम्युनिटीज ड्यूरिंग डिजास्टर ओके टोटल ए ईयर रही अराउंड 5000 and total 4 lakhs training नहीं सालानी आपदा मित्रज see these contents will obviously enrich your answers okay apada mitras you have to write apada mitras okay then 909 multi-purpose cyclone center means flood affected bhi hobo thik achi multi-purpose cyclone center pai 909 multi-purpose cyclone center is established ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ Doppler weather radar ठीक अच्छे for accurate detection and early warning disseminations there are for accurate predictions Doppler weather radar is implemented in 2 locations Paradip and Gopalpur ठीक अच्छे Paradip और Gopalpur Doppler weather radar दिया है and another thing आउ गोटे जिनस एटी तळे लिखिछि देखि दबो टिके जस्ट गोटे मिनिट हां देखो with every 1.5 किलोमीटर कोस्टल डिस्टेंस रे गोटे अलर्ट टावर है एंड टोटल ओडिसा रे कोस्टल डिस्टेंस रे 122 टा अलर्ट टावर रखाई डपलर वाटर दीटा रखाई आ प्रति 1.5 किलोमीटर रे दीटा गोटे अलर्ट टावर रखाई एंड टोटल 122 टा अलर्ट टावर रखाई टोटल ओके total sorry just I got a phone call that's why I was disturbed okay so the total I think 122 ta alert tower rakha hai next is our
Next is our आपदा मित्रस गला 900 हाँ next is one thing सतर्क. So देखो सतर्क गोटे कौन है ना वेब बेस्ड एप्लीकेशंस फॉर अर्ली वार्निंग. ओके सतर्क एटा प्रीवियस गवर्नमेंट रे स्कीम थिला एटा ओडिसा एवं न्यू गवर्नमेंट रे स्कीम अछि सतर्क. ओके सो यू मस्ट मेंशन सतर्क आपदा मित्रज केतेरा डॉपलर वेदर रडार अछि 1.5 किलोमीटर कोस्टल डिस्टेंस रे 122 टा अलर्ट टावर लगा है. And disaster resilient power infrastructure, seriously saying this thing is not mentioned in your economic survey. जेहेतु मु इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड रू मु पढ़ी थिली अगरु from Odisha post, that's why I have mentioned. So disaster resilient power infrastructure. So amar jetobale whenever there is a disaster, whenever there is a cyclone, the first and foremost thing is to evacuate power. Okay so that's why जो पोल अच्छी जो आमर स्टील स्ट्रक्चर थिला ताको चेंज करके लैटिस पोल यूज करा होची एच ब्रिज टाइप पोल यूज करा होची ताकि दैट 300 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड को टैकल करि परिबो. ओके that is called DPRI, disaster resilient power infrastructure, DPRI. ओके देन आउ कोन अछि ना डिजास्टर असिस्टेंट मॉनिटरिंग पेमेंट सिस्टम डैम तको कहउछन्ती डिजास्टर असिस्टेंस मॉनिटरिंग पावर सिस्टम पेमेंट सिस्टम सेतरे कोन होछि जदि तमर गोटे किछि गोटे फ्लड हैला तम घर भांगी जाईछि तमको गवर्नमेंट डैम्स यूज करके बहुत शीघ्र पैसा दे दबो. ठीक अछि जो कंपेंसेशन तमको. ओके देन अनदर स्कीम इज माटी तम जानिथिबो मुख्यमंत्री आड़ीबंध तयारी योजना. मुख्यमंत्री आड़ीबंध तयारी योजना जो फ्लड एम्बाकमेंट तयारी जस्ट गोटे फ्लड पाए रिवर रे एम्बाकमेंट तयारी होछि. देन योर MLY गोटे नुआ स्कीम अछि MLY मुख्यमंत्री लुणाबंध योजना. एथरे कोन होछि जो पूरी साइड रे जो कोस्ट समुद्र रो पानी जो पूरा ओडिया रे कहउछि जो समुद्र पानी जो चाष जमी रे माडी जाउछि तो चाष जमी क्षति होछि. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग नाउ अ न्यू स्कीम MLY मुख्यमंत्री लुणाबंध योजना. फर्स्ट वन इज आड़ीबंध योजना एंड दिस वन इज लुणाबंध योजना. देन अनदर थिंग ओडिशा डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक संगे मिसिकी ओडिशा डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट करिछि फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट हाउस जोटा कि ऑलरेडी 17,000 टा हाउस कंस्ट्रक्शन हे सारिछि. डिजास्टर रेजिलिएंट हाउस बनाउछन्ती वर्ल्ड बैंक संगे मिसिकी. ओके सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स एंड तुम जानिथिबो ए जिंसटा नोलिया साही सुनामी रेडी एशिया रो फर्स्ट सुनामी रेडी विलेज जोटा कि बहुत सारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होछि. ओके तो देन 20टा ओड्राफ यूनिट अच्छे जोटा कि 17टा लोकेशन रे 20 ओड्राफ लोकेशंस 20 ओड्राफ यूनिट एंड 743 किलोमीटर टोटल एम्बाकमेंट हेछि टू रिड्यूस द फ्लड. आ एटा तो कहि देछि. देन नेक्स्ट होछि mangrove restoration spine. You know, all of you know कि mangrove how it is reducing the flooding patterns. Okay that's why for the mangrove restorations sorry I'm again and again getting a call, that's why I'm disturbed. Okay so mangrove restoration spine in Kendrapada and Jagatsinghpur under ICZMP means integrated coastal zonal coastal zone management program रे mangrove restoration spine under these schemes mangrove restoration होची केंद्रापड़ा and Jagatsinghpur रे. Then another 6टा district रे all means 24/7 call facilities for emergency operation center. This thing is not important. The 6टा district रे emergency operation सेटा not important. बाकी गुडा तुम लिखि परिबो. Next is एटा तो जानिथिबो कि जो तमरो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन अछि गोठपाटन रे जो तमरो रेवेन्यू ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अछि रोटी जोटी ओआरएस हेले ट्रेनिंग पांती ता पाखरे अछि गोटे देखियो गोटे सिलेबस रे मेंशन हेछि गोटे पॉइंट कि इंस्टीट्यूशंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट रे भी मेंशन हेछि एटा. ओके सो तमे लिखि परिबो कि गोटे एसडीएमए गोठपाटन रे गोटे इंस्टीट्यूशंस देन गोटे फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूशंस नराज रे. ठीक अछि और बहुत सारा अछि ए दिले भी तमे मेंशन करि परिबो. ठीक अछि दीज आर सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. सो these things for the disaster management. then मु टिके वे ई गवर्नेंस को जाउची. अच्छा तो ई गवर्नेंस तो समस्त डेफिनेशन जानिथिबो ई गवर्नेंस रे. तो ई गवर्नेंस ओडिशा गवर्नमेंट रो ई गवर्नेंस रो कोन कोन स्कीम अछि देखो. ओडिशा गवर्नमेंट रो फर्स्ट कोन अछि ORTPS गोटे ओडिशा राइट टू पब्लिक सर्विस जोटा कि तम सिलेबस रे भी मेंशन अछि. ठीक अछि जब तमे गोटे एससीबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करूछ इफ इट इज जदि तमरो जो टाइमलाइन दिया हेछि टाइमलाइन भीतर तम जदि सर्विस न मिलला त तुमको कोन कहउछंती कि तमे ORTPS बुलेट रे पळै गला. ओके ओडिशा राइट टू पब्लिक सर्विस की सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पाई. ओके नेक्स्ट इज योर OSWAN ओडिशा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क. तो तार की पिलर कोन अछि ना डाटा वीडियो वॉइस कम्युनिकेशन अक्रॉस स्टेट. ओके
देन आउ गोटे कौन अच्छी साकार पोर्टाल जोटा कि तुम एससी एट्रोसिटीज रिलेटेड जो तुम किसी कंप्लेन अच्छी ताहले that will be registered directly with the Sakar portal, and that Sakar portal which is also in line with the CCTNS जोटा crime related जो CCTNS अच्छी CCTNS संगरे in linked okay. Then तमे HRMS भी जानी थिबो, then your cyber security operation center गोटे हेची, and next important thing is बाकी जिनस तो तुमको जाना थिबो ओडिशा स्टेट वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम 3.0 ई डिस्ट्रिक्ट ई प्रवेश गोटे जिनस अछि। ई प्रवेश कोन देखिथिबो जतबेले थर गवर्नर हाउस रे जो लोक पब्लिक पई खोला जाउची तो गोटे ई प्रवेश दरकार होची, तो तमे ई प्रवेश जानि परिबो टू ऑथेंटिकेट द विजिटर एंट्री टू लोकसेवा भवन गवर्नर हाउस ए सब जिनस रे। एंड आईएफएमएस बहुत जण आईएफएमएस यूज भी करिथिबो, ठीक अछि। देन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन मैनेजमेंट सिस्टम आउटे अछि टीआईएफएमएस, ओके। सो दैट इज फॉर एंड टू एंड मैनेजमेंट ऑफ टेलीकॉम एक्टिविटीज, ओके। आउ गोटे ओडिशा स्टेट डेटा सेंटर गोटे स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर तैयारी होची, okay. These are some of the Odisha government initiative for your for e-governance. आउ just टिके हाँ next होची मोर urban governance अछि, मोर urban development एटा भी सारी जीव मु जति के करिछि urban development भी सारी देबी। सो अर्बन डेवलपमेंट रो मो नॉर्मल जिंस स्मार्ट सिटी रे किछि न्यू थिंग्स हैनी, गोटे हेछि खाली भुवनेश्वर रे बीबीएसआर मी भुवनेश्वर मी माने गोटे सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेस सेठी तुमको सब फैसिलिटीज मिलिबो। देन गोटे राउरकेला हैबिटेबिलिटी प्रोजेक्ट गोटे हेछि फॉर बेटर हैबिटेबिलिटी ओनली, ओके। दीटा नुवा जिंस हेछि, जस्ट इफ यू वांट टू मेंशन समवेयर यू कैन मेंशन। देन अनदर थिंग आगरो ओडिसा रे 115 टा यूएलबी थिला अर्बन लोकल बॉडीज, नाउ इट इज 149, okay. So now it is 149, so out of 149 so एटी केतेटा मेंशन करछि मु, ठीक अछि। तो 62 टा एनएससी 48 टा म्युनिसिपैलिटी सी दिस डेटा दिस एटा जतबे 115 थिला, ठीक अछि। एबे एटा 149 टा प्रपोज्ड अछि, एटा प्रीवियसली जतबे 115 टा थिला, दैट्स व्हाई मु एटा पूरा देखिबो ऐड कर दबा 115 टा अछि। तो देखो हमर प्रॉब्लम कोन ना ओडिसा रे 85% अछंती तमरो अर्बन एरिया से लोक, बट इंडिया रे अराउंड 35% अछंती, ओके। तो जोटा कि गोटे तमे डिस्पैरिटी यू कैन कंप्लेन, ओके। तो कंपेयर यू कैन समवेयर यू कैन कोट दिस डेटा 18.5% ओडिसा रे अछंती, इंडिया रे अछंती 35% अर्बन रे रहउछंती। तो हमरा एम कोन अछि ना विकसित ओडिसा पई 35% हमको करियर अछि बाय 2036, ओके। बाय 2036 हमको 35% करियर अछि। सो एथि पई हमको किछि किछि स्कीम रे जिबा हम अर्बन हाउसिंग जिबा, देन हां अर्बन फर्स्ट इज अर्बन हाउसिंग रे हमको कोन करियर अछि। देखो गवर्नमेंट कोन करिछि ना ओडिशा हाउसिंग फॉर ऑल पॉलिसी फॉर अर्बन एरियाज इन 2022 रे हेतला ओडिशा हाउसिंग फॉर ऑल टू एड्रेस करंट रियल एस्टेट एनवायरनमेंट जो अच्छी ताकू करिया को पीपीपी मोड रे कोन करथला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड रे ओडिशा हाउसिंग फॉर ऑल, ओके 2022 रे करथिला। and that one is in alignment with the प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ओके। यू लिखा है जेटी अर्बन, ओके। गवर्नमेंट 5 लाख हाउस दबो बेनिफिशियरीज को इन अर्बन एरियाज, ता भितर 3 लाख होची ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रे एंड 2 लाख हाउस दबो एलआईजी माने लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी रे, ओके। एंड इंस्टीट्यूट फॉर एंड एटा स्लम रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट माने गोटे एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ स्मॉल रिहैबिलिटेशन सेंटर भी गोटे करिवो, ठीक अछि। जोडा कि प्रीवियस गवर्नमेंट रो स्कीम थिला भी मिशन जागा, ठीक अछि। सेडा सब थिला, ओके। सो अर्बन हाउसिंग रे तमे जस्ट लिखि परिबो कि ओडिशा गवर्नमेंट रे कोन अछि ना ओडिशा हाउसिंग फॉर ऑल 2022 रे थिला, ओके। पीएमएवाई संगरा 109 टा यूएलबी जो अछि अर्बन लोकल बॉडीज, ए डेटाटा मु कहूची 109 आउट ऑफ 115 बिकॉज एबे जाय 115 थिला जो माने जो डेटा सब निया है 109 डिवाइडेड बाय 115 मींस आउट ऑफ 115 100% यूनिवर्सल वाटर कवरेज, ओके। एंड नोटा यूएलबी रे ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटीज अवेलेबल अछि, डीएफटीसी जोटा कहंती ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटीज नोटा यूएलबी रे अवेलेबल अछि। एंड लाइक वाइज जोटा तमरो कि जो बैंक मित्र जो अछंती जो तमरो लाइक वाइज बैंक मित्र तमर कोन अछि ना जल साथी गोटे अछंती 807 टा जल साथी इन द स्टेट फॉर रेस्पोंसिबल वाटर मैनेजमेंट इन अर्बन एरियाज,
कौन कौन गवर्नमेंट करिछि तुम एटू बहुत भलो भलो पॉइंट पाई परिबा जल साथीस देखो तुम बाकी पॉइंट न लिखले जल साथीस ता तो तुम एग्जाम रे आंसर रे इनकलकेट करो बहुत भलो हबो जल साथीस देन गारिमा तुम जानिथिबो सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ द कोर सैनिटेशन वर्कर जो माने काम करछंती ठीक अछि तांको पई गोटे स्कीम आस्तला गारिमा तो 8824 गारिमा आईडी कार्ड ओडिसा रे डिस्ट्रीब्यूट हे सरछि 8824 गारिमा आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हे सरछि अंडर गारिमा स्कीम्स सेटा कहा पाई ना कोर सैनिटेशन वर्कर को पाई ठीक अछि जस्ट मु जस्ट 5 मिनिट टाइम नेबी 5 मिनिट लागिबो ने 2 मिनिट्स लागिबो नेक्स्ट हमें अर्बन सीवरेज पाखकु जिबा ठीक अछि देखो एटी देखि देबो कि केतेटा आउट ऑफ 115 रु केतेटा ओडीए प्लस अछि केतेटा ओडीए प्लस प्लस अछि केतेटा ओडीएफ अछि दरकार भी नाही बट टिके आखि पके दे जिवो कि जदी बाय चांस यू कैन इंप्लीमेंट दिस वन इन योर एग्जाम आ कोटे सबटु बड़ इनिशिएटिव हेछि आम सहर वेब एप्लिकेशंस फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ अर्बन सैनिटेशन पाई आम सहर दिस वन इज ए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा वेब एप्लिकेशन गुटे डिजाइन करिछि आम सहर ओके आउ सबु ईएलबीज रे सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक टाको बैन कराइछि ओके सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक सबु यूएलबी रे बैन कराइछि देन होछि 110 टा यूएलबी रे फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट गोटे हेछि एफएसटीपी ताको कहउचंती एफएसटीपी देन आम सहर गोटे रहला सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक देन गोटे हला देन 110 टा यूएलबी रे फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट गोटे एफएसटीपी हला देन नेक्स्ट पॉइंट देखो ए जिंसटा परसेंटेज ऑफ रूरल हाउसहोल्ड विथ इवन मु रूरल भी टिके डाटा ऐड करिछि रूरल हाउसहोल्ड रो ओडिसा रे 76% टैप वाटर एफएचटीसी जोटा अछि जोटा तो जोटा हाउसहोल्ड विथ टैप वाटर सप्लाई ओडिसा रे 76 नेशनल एवरेज होछि 81 तो एटा वाटर सैनिटेशन अर्बन रो तमे जस्ट मेंशन करि परिबा आम शहर कथा आ सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बैन कथा एंड जोटा जोटा कहली कि स्लज ट्रीटमेंट प्लांट कथा ओके देन आ गोटे होछि कि सुजल गोटे स्कीम आस्तला सुजल कोन ना ऑल हाउसहोल्ड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया विल बी कवर्ड अंडर पाइप वाटर पाई गोटे आस्तला स्कीम आस्तला सुजल एटा लिखि देछि ऑल हाउसहोल्ड इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज विल बी कवर्ड अंडर पाइप वाटर नेक्स्ट कोन अछि पीएचईओ एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन presently it is monitoring the water supply across all ULBs okay whether the water supply is means perfect whether there is any leakage or not odisha re ke dekhuchi na public health engineering organization okay PHEO then awas eta to jani cha housing for all in ULBs eta normal jinsata au gote bodo jinsa eta last thing जो अमृत योजना अच्छी अमृत 2.0 जोटा चले तो ओडिसा रे ओडिशा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड OUIDF गोटे चलुची OUIDF फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस स्टेट ताकू अमृत 2.0 पाई जो फंड रेजिंग करूची अमृत 2.0 पाई जो 60-40 रे जो 40% फंड जो अनुची से फंड टा की दोची ना ओडिशा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड OUIDF ओके so to fund allocate karuchi so these are the some of the schemes for the sewerage you can mention this amo sahara and sujal yojana and this OUIDF thing then garima then your jal sathi you can mention some of the schemes eta a year economic survey tike te bhalo nai urban development re mu last year ta ko भी add कर देछि means july 2024 रे जो budget time रे जो आस्थला सेही scheme ta को भी add करिछि तमरा ताको भी पढिया दरकार नाही so this much is from my side I have already uploaded the PDF in the group those who want you can download it okay that's it from my side how was it is it beneficial टिके लास्ट को टिके बोरिंग लागि थो अर्बन पढिला बेले